So guys, finally we are live now. I was trying from last 10 minutes and there was some error it was showing. No worries, let's everyone join and we'll start the discussion. And this time I'm doing this live, I think maybe after 1 month, if I remember, or maybe more than that. Okay. So Bhushan is asking, hello sir, can you provide only interview training? Mm, yes, Bhushan, that can be done. I can. Sharadya is asking, hi sir. Not asking, he's simply telling, hi sir, how are you? I'm doing great. How about you? Genius Upadhyay. Hello sir, good evening. Good evening, Genius Upadhyay. So I believe your name will be something different, right? Genius, you have kept it. So few names I know, but few names are new. So guys, in the comment, can you tell me like what the people who are watching this video are, asking comments? Can you tell about yourself, about your educational degree, and how did you got connected with this channel? Nikhil, how much it costs to complete clinical SAS? So in clinical SAS, you are considering in clinical SAS course, you are considering R as well, Python as well, or only SAS software, Nikhil? Because the cost vary as per the number of softwares you are learning. Mr. X, hello. Prem Sain, hello sir. I'm planning to settle in US. Planning to do SAS job there. See, guys, a lot of you guys are having confusion. SAS is not a role. SAS is a software that is used for data analysis like R and Python. So even now the role is named as statistical programmer. Okay. So on this role, even companies have started using SAS, R, and Python. So if you're learning, if uh, you're training yourself to get into this role, at least you should have two software knowledge. One is SAS, another is R, and then you should have clinical knowledge as well, like creating SCDM, ADAM, table listing. So this should be the minimum. And Prem Sai, yeah, that's a good plan actually. In US, I think maximum CROs are in US only. Shiva is asking, sir, I am MSc statistics student. What the scope for me in statistical programmer? What project should I do? Uh, Shiva, I have already created videos, a lot of videos on YouTube. One of my recent video will be roadmap to become clinical SAS programmer in 2025 maybe or 2024. Just watch that video. I have explained in detail. So coming to this role, if I have to talk about being a statistician or being an statistics uh, grade, belonging from that background, what your contribution will be on this role. So on statistical programmer role, you will be actually analyzing the participant or patient data, all the people who will be enrolling in the study. You'll be analyzing the study data and whatever data we are collecting
from the patient after giving them the study drug. On the basis of that, analysis would be done, and you'll be responsible for the analysis, standardization, submission of the study data. Yeah. For detail, you can watch my other videos. म्यूजिक मस्ती हेलो सर मैं एक स्टार्टअप काम करता हूँ 15,000 पेमेंट है जावा प्लस एंगुलर 2 ईयर एक्सपीरियंस है एंट्री करने आ रहे हैं बस थोड़ा सा रुक जाओ और जो भी कंपनीज के डायरेक्टर या मैनेजर हैं अदर कंपनीज के उनको रीच आउट करो आपका 15,000 आपके 2 साल का एक्सपीरियंस है ना आप 6 महीना और थोड़ा सा वेट करो और अप्लाई करो एंड 15,000 50,000 हो जाएगा 40 to 50,000 आप मिनिमम आपका जो एक्सपर्टीज है उस पर आप ले सकते हो ठीक है इजिली प्रेम साई विच कोर्स इज बेटर टू डू फॉर मास्टर्स which course is better to do for masters prem sai masters in what you want to do masters but in what see which course is better to do okay you are asking me that in masters which course you should choose is it I got confused between the courses like this clinical SaaS or database or cloud courses you are asking me I should what I should choose in masters right is it the question or I am getting confused just clear me out Rishi hi sir it's long time to connect with you tomorrow I'll call you for sure Rishi please call me it's been even long time to me as well I didn't talk to you Prem Sai, which course? Okay, the same question. Sir, whom you know? Genius Upadhyaya. Sir, whom you know? Rian got you. Come again. Thank you, Nikhil. Hey, Kiran. I'm doing great. How about you? And tomorrow is Sunday. You and Kiran, you can call me. Like it's been long. We didn't talk. Okay. म्यूजिक मस्ती हेलो सर मैं एक स्टार्टअप में काम करता हूँ 15 हाँ आई थिंक म्यूजिक मस्ती आई हैव ऑलरेडी answered your question KMG learnings hi Shubham I got placed in Fortria Bangalore as a fresher that's great role is statistical programmer analyst working on reconciliation process you are part of my journey thanks for guidance KMG learnings as your name you have kept here KMG learning I don't know from this name so can you do one thing one favor to me just connect me on LinkedIn we can have a conversation maybe by your journey we can share some insights to others and that can be a guidance like I'm able to give you some guidance or I was able to be the part of your journey maybe your guidance can be the part of some other people's journey right so I hope I'll get a ping from you for sure Narsinga hi hello hello Narsinga Nikhil, how to identify a good clinical SaaS institution? Nikhil, basically just talk to their previous student if possible. Let's suppose my institute name is Clinical Study Academy. Just go on LinkedIn, write Clinical Study Academy, and click on people. So you'll get a lot of people who got trained from Clinical Study Academy, and they might have added this in their LinkedIn. And you can talk to those people, like randomly, just do it the same process for any institute and if people are giving positive feedback that the training was and training and support was good then you should join that particular institute or just randomly talk to 10 15 institute and see who is actually guiding you and then if you feel that okay this institute or you are confused between these two institute just talk to their ex student it will give you better clarity and don't join an institute on the basis of placement because that is mostly will face like you'll feel like a scam so don't go with that okay Mr. X, hi sir, I have completed clinical SaaS as a fresher with base advanced SaaS
SDM Adam, but I didn't got selected even for a single interview in LinkedIn. Means Mr. X, you mean to say that you didn't got a single interview till now? So, guys, this is a brutal truth. Brutal truth. Today in the live, it's been 10 minutes to me. I found one person who got selected in Fortria. Okay, and so there will be many people who might be not attending our session. Many of them didn't got selected, and some of them got selected. So, Mr. X, you need to understand this is a part of journey, that sometimes things will not work for us. It might work for others, and sometimes things will work for us, but it will not work for others. So you need to wait for your turn. You need to be consistent. You need to improve yourself in a consistent way. And no worries, this is a part of your journey. Okay. Nasinga, I'll do the course and certification, then can. Obviously, you should get interview, but obviously you should get interview. I believe, yeah, the process takes time, but you can get interviews. Monkey, the Luffy. Sir, B Pharma के बाद clinical says, or should I go for MBA college placement in marketing? See, what I feel that, guys, whenever this question comes up, ki I have done degree and I want to do I should do masters or MBA, or I should choose a good course after degree. So I always believe as we are moving on, what I'm seeing, uh, 5-10 years back, diploma would be a enough degree to get into any role. Okay, 10-20 years back. Now, if we talk about the recent years, let's go 5 years back. From 20 years back, let's come to 5 years back. 5 years back, degree was the in degree is the degree. Degree is the enough. If you have done degree, you are eligible for almost all the roles in any industry. But now slowly that shift is going to masters or sometimes MBA. So still, if you have degree, you are eligible for almost all the roles in almost all the industry. Degree means graduate. Earlier it was diploma. So the diploma, the shift happened to degree, and I think in future from degree the shift will go to masters or PhD. But once you are in the industry, once you started working on a good role, then your degree doesn't matter. Like it's all about the skills. It's all about the skills. So yeah, I hope you got some clarity, and either you do degree or PhD. At the end, it's all about the role, on which role you are working. So you should be very clear with the role. Okay, even after doing degree, on which role I'll be working. Shiva is asking, as a MSc statistics student, what extra knowledge should I work to make good profile for statistical programmer role? Being a statistics background, you can work more on the statistics part. What are the behind the scene? What are the statistics used in the clinical? Okay, apart from the software and creating SDM Adam data, and maybe you can bring some research that was recently done. Key using the statistics or in the statistics, this is something new which I found recently, and I think this logic can be used to something related to project or something you can bring out of your degree practical. Apart from the degree and the calculations and statistics are present, something practical if you can bring on the table, they're gonna help you, I believe. You just try to connect the degree you have done and the industry or the role you want to work. So what benefit you can create on that role using your degree? Something, just check on internet. Internet is full of things. So that's gonna help you a lot.
I haven't told you the specific, but I have given you the broader view. Why a channel, sir? When you start online free batch? Right now, I have started offline. Online one will take little time. It will take little time. So I have 2 years of experience in medical coding. I did AM pharmacy in 2018. Okay. So someone is asking in the comment, guys, ki I have 2 years of experience in medical coding. Even I have done M pharmacy. Should I switch to clinical SaaS? Will it be good choice? So see, whenever you want to, let's suppose if you have experience, it means already you are working on some role, but maybe on that role you are not getting enough pay, enough growth, enough work-life balance, and that's the reason anyone want to switch. Now, while switching, you should at least consider a minimum 5 roles. And on those 5 roles, you should get what you didn't get in the current role. Let's suppose in the current role, if you're not getting good pay or good growth or good work-life balance, you should actually get. Then the purpose of switching will be considered, right? Or would be considered. So in that case, guys, what I believe ki being a clinical SaaS trainer, if I'm telling you that choose clinical SaaS, it will get biased. But what I'll suggest you, finalize at least 3 roles, finalize at least 3 roles, and ensure on those 3 roles there should be a little good work-life balance. There should be growth in terms of technical knowledge, in terms of pay as well. Most probably the current generation is shifting towards software, so if it includes some software or something technical, it will be more good for you. Then the choice should be yours, because if you are choosing from top 3 roles, or the if you are choosing from 3 roles which is having growth and pay everything, so all the 3 will be good for you. Either it can be clinical SaaS or it can be other as well. Coming to clinical SaaS, yeah, the role is good, but the competition is also there. I believe any role which is good, the competition is there, the competition is high. So instead of I'm telling you, and like it feels like sometimes me giving a biased, call. So it's totally up to you. So childrens are playing, beside, so that's why some noise are coming. And mm, 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 mm. Hello, Tosif. Nikhil, is there any chance that AI will affect sales programmer job? If there, how much? AI gonna affect few things, that the things we are repeating that gonna be automated. That gonna be automated, because I believe even being a statistical programmer using macros, long back we used to a lot of things automate. Right now using R, some things are, libraries are created, so it can do 30-40% of your work. So the things which are repeating, that is getting automated. But if you ask me, sir, the will it affect the entire role? No. So it will optimize our task. Right now, as per my knowledge, it will optimize our task. Optimize means earlier it might be taking the whole process 10 hours, so it will cut down to 6 or maybe 5. Maybe the way optimization happens. Narsinga sir, okay, I have already answered. Tausif सर बेसिस एग्जाम में प्रोग्रामिंग सेव करने का नेसेसरी है क्या, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर? सो बेसिक्स एग्जाम के ऊपर मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, बेसिस एग्जाम प्रिपरेशन, एंड इवन बेसिस एग्जाम का प्रिपरेशन में आपको पूरा गाइडलाइन मिल जाएगा डिटेल में, तो आप वहां पे जाके पढ़ लो कि उन्होंने क्या लिखा है, तो सिर्फ मे बी एग्जैक्टली आपको वहां पे लिखा हुआ मिल जाएगा। सैस की ऑफिशियल वेबसाइट पे वो पूरा स्टेप बता देगी कैसे आपको क्या करना है।
सो एग्जाम देने से पहले आप सभी को उनकी एक प्रैक्टिस एग्जाम होती है, बेसिस एग्जाम की, SAS की ऑफिशियल वेबसाइट पे दैट इज अवेलेबल. इवन हैव क्रिएटेड अ वीडियो. गो एंड check that video and even go to the SAS website before giving the BASIS exam. It will help you a lot. So Tasif, you can get your answer over there. Hi sir, I have experience. Okay, answered. It's been 8 months. Could you please provide better CV for clinical science fresher? I have tried to apply, but I belong to BSc Life Science background. I am not eligible. See, रख दिया. Okay. Okay. So guys, see again, it is not about the CV. I believe CV जितना simple बना सको, keep your CV as simple you can. Keep your CV as simple you can, and you're not getting selected. Mostly it's not because of the CV. Maybe our CV is not reaching to right person at right time. So I feel we need to actively connect people, and we need to actively talk to people, and we need to actively post on LinkedIn. Whatever you are learning, just post on LinkedIn. Create a PPT, PDF. This thing's gonna work for you. Recently it happened, one of my friend, he was posting regularly, and he got some calls, I think 2 3 calls. So that's work. So apart from applying in the post or applying in the mails, if you start posting on LinkedIn about your learnings, a lot of things, whatever you are learning or whatever progress you are doing, if any questions you are having, so you will be very active. Your profile will be visible to a larger group of people. Sir, I have experience in, okay, I have answered. Okay, so KMG Learnings. Okay, Shubham, if possible, we can connect one to one on Saturday or Sunday. My interview questions might help someone. Other get ideas which areas MNC do ask questions for freshers. For sure, for sure. Nursing, KMG Learnings. Okay. Champ, how to get in touch, practice after completing the clinical SAS course. So for that already, I have created video that how to connect working professional, and like how to reach out on LinkedIn or multiple platforms. I have created video on that. नर्सिंगा सर, मुझे करंटली मेडिकल क्लिनिकल साइंस में एक्सपीरियंस है. अगर मैं क्लिनिकल फ्रेशर ज्वाइन करूँ तो उस पे हाइक मिल सकता है. आई एम नॉट श्योर, बट सी आई कैन डैम श्योर कि जो आपके एग्जिस्टिंग जो जॉब रोल है उस पर जो पे होगा क्लिनिकल साइंस पे, उससे ज़्यादा ही आपको पे मिलेगा. एंड लेट सपोज किसी कंपनी ने अगर लेट सपोज क्लिनिकल साइंस पे आपको कम भी दिया आपके करंट रोल से, मेडिकल कोडिंग से और मेडिकल क्लेम से, तो 1 2 साल बाद इस रोल पे बहुत ट्रमेंडस ग्रोथ मिलेगा. लाइक 3 से यू कैन गो 6, 6 से यू कैन गो 10 और 12 एज वेल. बट इनिशियली आपको कितना हाइक मिलेगा, इट टोटली डिपेंड अपॉन द कंपनी आर ज्वाइनिंग. But yes, your previous experience gonna help you for sure. Nikhil, is the SAS program is the only one, or there are competition for SAS or better? Nikhil, SAS is not the only one. Now the role is statistical programmer. Now along with SAS, one should for sure learn R as well, and if possible, one should learn Python as well. So SAS, R must, and if possible, Python should be also learned. So if today I have done my SAS base exam and passed this exam, also received mail confirmation, but I missed to save some program.
Okay. Just Tausif, just ping to SaaS company about this. There will be some mail ID to connect them. Just reach out to them. They'll surely help you. But reach out ASAP with this concern. Okay. अमेजिंग टीचर सर डेली कितने आवर्स प्रैक्टिस लगेगा 2 आवर्स का प्रैक्टिस ठीक है बहुत है सुरेश रेड्डी can you please provide us a list of companies that hire SaaS programmers Suresh I have already made a list of companies by city wise and there you can find okay so let's wait for others सर मेरा फूड टेक्नोलॉजी हुआ है मगर इसमें बहुत स्लो ग्रोथ है इसमें स्टार्टिंग में 3 LPA का पैकेज है बट नहीं है जिसमें कम समझता हूँ मुझे स्टार्टिंग में 12 के था अभी थोड़ा ये बढ़ा है फूड टेक्नोलॉजी देखो इनिशियली कोई चीज़ को सीखो थोड़ा एंड अपने आसपास पलट सपोज अगर आप फूड टेक्नोलॉजी पे हो देखो आपके जो सीनियर हैं फूड टेक्नोलॉजी में जो आपके साथ कंपनी में उनकी ग्रोथ क्या है उनकी पे क्या है उनके सजेशंस क्या है अगर आसपास वालों से नहीं जानने मिल रहा तो लिंक्डइन में जो आपके रोल पे काम कर रहे हैं जस्ट टॉक टू देम गेट एन आइडिया आपको क्लियरिटी आ जाएगी ओके एंड स्टिल अभी जो करंट रोल पे हो उस पे आपको थोड़ा ग्रोथ मिला है 12 के से यू वेंट टू 23 राइट तो स्टिल बेटर राइट 2 आवर्स प्रैक्टिस लगेगी अमेजिंग टीचर यू हैव टू गिव 2 आवर्स okay I hope guys my audio is clear to everyone right just confirm in the comment अमेजिंग टीचर सेलिंग सर करंट रोल में प्रॉब्लम है कि टाइम हमारा पूरा ले लेता है 14-16 आवर्स 14-16 आवर्स तो बहुत ज़्यादा है इट्स लाइक अग्नि परीक्षा यू हैव टू डू समथिंग लाइक अगर आप काम को एंजॉय नहीं कर रहे उस पर ग्रोथ भी नहीं है मे बी अगर ग्रोथ है तो ठीक है नहीं तो फिर दैट डजंट मेक सेंस where I can find the list of companies videos are there check on my YouTube you'll get videos where you can so just write this list of CRO in Hyderabad or Ahmedabad or Bangalore you'll get some videos Shahik sir I've completed base as only can I apply for internship yes you can apply but I believe Shoaib obviously a lot of people will be competing with you with proper knowledge base SaaS, advanced SaaS, clinical SaaS, and having the knowledge of HDM Adam, maybe some people have learned R as well. So obviously the chances will be high. Okay. But if you want to apply, apply, no worries. Okay. If you get a opportunity, that's great. Amazing. इसमें health खराब हो रहा है. Okay. Okay. Then think about it. Do something. वैसे सर मैंने बहुत सर्च किया है हर कोर्स वाला मेरे कोर्स अच्छा है ऐसा ही कह रहा है प्लीज़ ऑनेस्टली बताएं कि सच में किस कोर्स में जाना चाहिए अमेजिंग टीचर टेल मी योर एजुकेशनल बैकग्राउंड आप किस एजुकेशन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो और आप ने क्या क्या ऑप्शंस रखे अपने लिए क्या क्या आप सोच रहे हो कि क्या क्या करना चाह रहे हो क्या ऑप्शंस एक्सप्लोर किए मे बी आई कैन हेल्प यू या तो हम 1-to-1 काउंसलिंग पे कनेक्ट हो सकते हैं देयर वी कैन हैव अ बेटर डिस्कशन थैंक यू शोएब डेटा एनालिस्ट क्लिनिकल सैस मेडिकल कोडिंग वेब डेवलपमेंट देखो डेटा एनालिस्ट और क्लिनिकल सैस तो सेम हो गया
अगर आप क्लिनिकल सैस रोल पे सैस के साथ आर पाइथन भी सीखते हो तो आर पाइथन का नॉलेज आप डेटा एनालिस्ट में भी यूज हो सकते हो। तो अगर आप क्लिनिकल सैस सीखते हो तो डेटा एनालिस्ट फॉल अंडर दैट ओनली काइंड ऑफ। तो वो दो तो कंफ्यूजन दूर हो गया, राइट। बचा मेडिकल कोडिंग और वेब डेवलपमेंट। तो मेडिकल कोडिंग को मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूँ और काफ़ी स्टूडेंट्स अभी भी वो आगे जाना चाहते हैं। तो मेडिकल कोडिंग से एक्चुअली द सैलरी एंड ग्रोथ ऑफ क्लिनिकल सैस इज वे मोर, 40-30% का डिफरेंस आ जाता है। एंड वेब डेवलपमेंट और क्लिनिकल सैस में कंपटीशन, लास्ट में ये दो बच सकते हैं, वेब डेवलपमेंट और क्लिनिकल सैस। तो इसमें से आप चूज करो कि किस में जाना चाहोगे। Nikhil, if you have experience, then for sure. Being a fresher, it's little difficult. Even in remote jobs, you can get being a fresher as well, but there are few companies who provide remote jobs to fresher. But if you have experience, multiple companies, come into picture, and you can get a job there, and you can work remotely. ऐसा कोई कोर्स नहीं है जिसमें कुछ ही समय में जॉब लग जाए। जितने भी कोर्स हैं उसमें आपको समय लगेगा। ये मेरी बात आप लिख सकते हो, बिकॉज आई हैव ट्रेन टू मेनी स्टूडेंट्स। आई हैव बीन इन दिस सिनेरियोज मल्टीपल टाइम। सो या इट गोना टेक टाइम। Yes, Shahik, you can connect. You can just ping me on WhatsApp, sir. This is my like this said Shoaib here. Please tell me when we can connect. We can schedule a call. Yeah, yeah. So guys, if you are having more questions, we can continue, or within few minutes we can wind up this live session. Nikhil, does Indian government offer SaaS jobs? Yes, many of the state governments are using SaaS. But now I believe if you want to start your career, even on this role, clinical SaaS, clinical industry, statistical programmer, you should not only learn SaaS. A minimum along with SaaS, you should learn R. And if you have time and if you can put effort, learn minimum SAS, R, and Python. Okay. Or minimum, you can go for SAS and R if you don't want to learn all these three technologies. SAS and R would be enough. अमेजिंग टीचर सर। तो क्या क्लिनिकल साइंस में स्टार्टिंग में वैकेंसी आती है? क्योंकि देखो स्टार्टिंग, देखो वैकेंसी हर जगह होती है बट इतनी नहीं जितनी पॉपुलेशन है, राइट। हमारे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हर रोल के पीछे 100 लोग खड़े हैं। एट ए टाइम एक कंपनी को 10 बंदे हायर करने होते हैं, 10 या 12 या 15 इस रोल पे। सो कंपनी सबको कंपनसेट नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से टाइम बहुत लग जाता है। दैट्स अ फैक्ट। जो भी डिमांडिंग रोल है सभी पे सेम सिचुएशन है, टाइम लगता है थोड़ा सा। थैंक यू निखिल। Amazing teacher, it's gonna take a minimum 5 months, 4 to 5 months. If you're learning minimum 2 tools along with the clinical, SAS, and R software. Okay, so guys, I think I have taken most of the questions. If anyone is pending with the question, you can ask me. Keertho, currently I'm in BFSI, want to switch to CRO. How to prepare? Very simple. Learn minimum these three things. Already you might having the SAS knowledge. If not, get it. Then R, if possible, get Python knowledge as well, and then the clinical knowledge.
get the heads on experience on projects like creating SDM Adam table listing. So basically, either you learn from your own, or either you learn from any training institute. You should minimum learn SAS, R, and the clinical part, and if possible, Python as well. Mr. Unknown, I quit my QC job and मैं clinical SAS institute फीस 2 लाख मांग रहे हैं 6 मंथ की ट्रेनिंग के. सी गाइस, 2 लाख फीस स्कैम है, लूटने का धंधा है. यहाँ पे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट टोटली गलत है. 2 लाख फीस नहीं होनी चाहिए. सी व्हाट आई एम चार्जिंग टू स्टूडेंट, मैं आपको यूट्यूब पे बता रहा हूँ अभी आज के टाइम पे. तो क्लिनिकल पार्ट अगर आप मुझसे करते हो तो 20K. सैस सॉफ्टवेयर सीखते हो, क्लिनिकल पार्ट में प्रोजेक्ट स्टडी सब आ गया जिसमें एसडीएम मैडम टेबल लिस्टिंग, ठीक है. सैस सॉफ्टवेयर सीखते हो उसका 20K. तो मिनिमम कोई भी सैस सॉफ्टवेयर और क्लिनिकल पार्ट सीखता है 20 हो गया. और उसके बाद सैस के साथ आर भी सीख रहे हो, जो कि आज के टाइम पे रिक्वायरमेंट है, सैस और आर मस्ट. तो आर का 20K. लेकिन आप 2 सॉफ्टवेयर सीख रहे हो तो दूसरे सॉफ्टवेयर पे हम 5K डिस्काउंट दे देते हैं. तो कितना हो गया? तो 20 + 20 सैस का 20 हुआ और क्लिनिकल का 20, तो 40 हुआ. आर भी ऐड किया तो 20K उसका हुआ तो 60 हुआ. लेकिन 5K का डिस्काउंट दे देते हैं क्योंकि 2 सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, तो 55K हुआ. अब 50 पाइथन भी अगर सीख रहे हो तो 15K और जोड़ दो, राइट. मे बी 65 या 70. इतना सीख के भी 3 सॉफ्टवेयर सीख के भी 70K के मतलब 70 या जितना भी 75 के अंदर जो भी है, मैंने आपको बताया. कैलकुलेशन कर लो सिंपली, मैंने वो बता दिया. क्लिनिकल पार्ट का 20 और सॉफ्टवेयर का 20. बट 2-3 सॉफ्टवेयर सीख रहे हो तो हम 5K का उसमें हर सॉफ्टवेयर में डिस्काउंट दे देते हैं. तो ऑब्वियसली वो 2 लाख तक तो नहीं जाता, और नहीं जाना चाहिए. SAS plus R is a good combination and that is the minimum requirement as well. मिस्टर अननोन वो बोल रहे हैं कि इंटर्नशिप को 10K देंगे 6 मंथ. कोई मतलब नहीं है, एक स्कैम है. आपका पैसा ही आपको घुमा के और ऐसा करके कोई ये करने का मतलब नहीं है. दिस इज काइंड ऑफ स्कैम, इतने पैसे लेके फिर घुमा के. पहले ही इतने पैसे आपसे जमा करा लो, फिर ये सब करो, आपके पैसे ही आपको रोटेट करें, ये सब क्या है मतलब. नहीं मीनिंग है, ऐसे करने का मीनिंग नहीं है. Sag Denny, how to handle gap of 10 years due to conversation. If you're having this much gap, I feel psyched. Instead of getting into clinical SaaS, you should look in your life that what else you love to do. You should try something new, and this is for everyone, guys. If possible, figure out what is something you love to do and try your hands into that. Yeah, these roles are, becoming IAS or becoming this officer or becoming a statistical programmer or clinical science programmer. These are high paying and high growth jobs. But you should figure out sometimes that what is something you love to do and try getting into that industry, that role, and maybe you're gonna grow more. MSc bioinformatics can eligible for SAS role. SAS is not the role. The role is statistical programmer. SAS is one of the software that is being used. Harsh. The role is statistical programmer. So yes, MSc bioinformatics is totally eligible. मिस्टर नॉन सर, ऐसा इंस्टीट्यूट बताओ जो पुणे में हो, जो प्लेसमेंट के भरोसे तो कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं मत करना, सभी स्कैम है. फॉर श्योर 100%. मैंने अभी तक कम से कम 50 मिनिमम स्टूडेंट्स का काउंसलिंग किया होगा, जो 50 शायद डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट से हों. एंड उसमें से काफ़ी लोगों को प्लेसमेंट का गारंटी बोला गया था, या ऐसा बोला गया था. बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट भी थी जिसमें जिन्होंने 2 लाख 2.5 लाख 1.5 लाख भी लिया है. एंड दे आर अनेबल टू प्रोवाइड, क्योंकि प्लेसमेंट अगर कोई दे भी रहा है तो शायद 100 में से 3 को दे पाएगा.
दैट्स अ रेशियो, 100 में से 3 को या 50 में से 3 को, दैट्स हाउ। Aniket is asking, what about SAP? Same goes to SAP as well. One of my friend, he recently got interview in SAP only. It also took good amount of time to him after, So interviews take a lot of time, but right now he is having 2 interviews scheduled. I think he got called for 3 interviews. 2 interviews got scheduled for him. One of the interview he have given today only in Vadodara. Aniket. Side Daniel, prepare as or quit. If you have interest on this role, statistical programmer, don't call it SAS, guys. SAS is one of the software used on this role. Then go for it. If you don't have interest, do something in which your interest is that. Okay. अमेजिंग टीचर सर। सर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैसा है? सर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैसा है? ठीक है, करियर बिगिन करने के लिए कुछ भी सही है, बट लॉन्ग टाइम के लिए नहीं, आई फील। दोनों ही सही है। अगर ऑफलाइन है तो ऑफलाइन कर लो। अगर सी इट्स टोटली डिपेंड अपॉन टीचर, व्हाट आई फेल्ट। टीचर अच्छा है तो आपको कैसे भी अच्छे से पढ़ा देगा, लाइक नहीं अच्छा है तो फिर कहीं से भी पढ़ लो, नहीं नहीं समझ में आएगा। ऑफलाइन में है तो ऑफलाइन चले जाओ, बट टीचर शुड बी गुड और इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम ओनली एंड मनी। Abhiyam, how a SAS programmer can get practical exposure that is on real-time project? Simply work on a study. अभी मोस्टली जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इवन वी डू ट्रेन ऑन अ स्टडी। हम एक स्टडी पे काम कराते हैं, स्टडी के बारे में बताते हैं, प्रोटोकॉल वो सब सारी चीजें। फिर उसका डेटा, उसके डेटा पे हम क्रिएट करते हैं एसडीएम एडम टेबल लिस्टिंग। अभी मोस्टली इंस्टीट्यूट में चीज है और नहीं है तो होनी चाहिए। दैट इज काइंड ऑफ रियल टाइम ओनली। Okay, so guys, any more questions? Anyone? कभी भी होती है। अभी जैसे फाइजर ने इंटर्नशिप का डाला है, आई थिंक फोर्ट्रिया ने भी वैकेंसी डाली है, एंड अभी मेरे ख्याल से 5-6 कंपनियां हायरिंग कर रही हैं। ये 2-3 का तो मुझे ही पता है। मेरा इंस्टीट्यूट ऑफलाइन में वडोदरा में है, और ऑनलाइन में मैं पिछले 4 या 5 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ऑफलाइन हमने अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया है। सो क्लिनिकल स्टडी एकेडमी नेम है, मिस्टर अननोन। Abhiyam, career gap people. See, career gap people should try something where their interest is. क्योंकि आपको थोड़ा गैप हो गया है ना, तो दो चीजें, या तो जिस चीज की डिमांड है उसमें जा सकते हो, लेकिन देखो कि मेरा इंटरेस्ट किस में, मुझे किस में थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, मजा किस में आ रहा है, और क्या उसमें कौन सा करियर है, तो उसमें अच्छे करियर को चूज करो। क्योंकि ऑलरेडी आपका गैप है। गैप होने के बाद अगर कोई आप ऐसी चीज कर रहे हो, सीखने की कोशिश कर रहे हो जिसमें आपको मजा नहीं आ रहा, तो आप बोर हो जाओगे और शायद इतने अच्छे से नहीं करोगे, और इवेंचुअली फेल होने के बाद आप बहुत डीमोटिवेट होगे। तो जब आपका गैप हो जाता है ना, फिर आपको कुछ ऐसा चूज करना चाहिए जिसमें आपको मजा भी आता है, योर इंटरेस्ट इज दैट, एंड फिर आप उस चीज को मन लगा के करते हो, एंड रिजल्ट मिलता है तो आपको मजा भी आती है। दैट्स अ पॉइंट। मिस्टर अन्नो, इट्स इन वडोदरा। मोस्ट प्रॉब्ली यही सैटरडे या संडे को। अभी सर आई एम ऑल्सो मैकेनिकल 2016 पार्ट आउट। मैंने बहुत सारे स्विचेस किए अभी। सबसे पहले तो मतलब डिज़ाइन का कोर्स किया, डिज़ाइन का कोर्स कर देते 6 महीना ऐसे निकल गया, शायद साल। फिर इंटरव्यू नहीं मिल रहे थे, बहुत डिमोटिवेट हुआ, पूरी वीडियो बनाई है मैंने। फिर इंटरव्यू मिले, सेलेक्ट भी हो गया, बट मेरा मन उठ गया, मैंने मतलब ज्वाइन ही नहीं किया, डिज़ाइन की जॉब छोड़ दी, मतलब हाँ ज्वाइन नहीं किया। फिर एक जॉब मिली डिज़ाइन में, किया थोड़ा टाइम, फिर 1 महीने में छोड़ दिया। देन
went to Bangalore. Then I tried something by my own, कुछ मैंने स्टार्ट किया. बहुत अलग अलग चीजें होने के बाद मैं स्टेबल हुआ एक रोल पे, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर. फिर आज के टाइम पे अभी फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे वो जॉब भी नहीं करनी, मुझे फुल टाइम टीचिंग करना है. देन नाउ इट्स बीन 4 years, अभी मैं टीचर हूँ. तो जहाँ मज़ा ना आए वहाँ से निकलो, जहाँ मज़ा ना आए वहाँ से निकलो. बहुत ज़्यादा रहने की ज़रूरत नहीं है. बहुत ज़्यादा सोच के ज़िंदगी को मुझे लगता है कि हमें नहीं रहना चाहिए ऐसी सिचुएशंस में. लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू अब ठीक हो जाएगा. एटलीस्ट जो डिसीजंस आप ले सकते हो तो वो तो लेने चाहिए. मिस्टर अननोन सर, ऑनलाइन कोर्स फी एंड ऑनलाइन क्लास में स्टडी प्रोजेक्ट पे वर्क होता है? ऑब्वियसली होता है. मिस्टर अननोन, फॉर डिटेल डिस्कशन, बिकॉज कभी भी किसी का ऐसे ही वीडियो देख के नहीं ज्वाइन करना चाहिए. चैट पे पूछ के आप मुझसे 1-to-1 काउंसलिंग कर सकते हो. देयर इज अ ऑप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या किसी मेरे वीडियो या चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको 1-to-1 काउंसलिंग का लिंक मिल जाएगा. आप उसके थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और वहाँ पे हमारा डिस्कशन होगा. जो भी सवाल आप पूछ सकते हो. हर्ष, लाइफ साइंस स्टूडेंट के पास? हाँ, ऑब्वियसली रहता है. Sir, working on domains only we can get grip in their SAS programming. That's correct. Working on domains means creating those data sets, DM, AE, and all these data sets. No? Yes. So creating those data sets is gonna give you more grip. That's correct. Sure. For how much English speaking makes better for interviews? Uh, See, English is something. When I started learning SAS, my English was, very, very bad, long back. Slowly, it got improved. After getting the job, it got improved more, and slowly, you know, uh, I'm able to speak. Still, I feel I do a lot of mistake because I don't speak English much. Sometimes only I used to speak, and I feel that yeah, it's not improving, but that's fine. जितना आता है उतना बहुत है मेरे लिए. सब जद्दोजहद, सारी मेहनत बिगिनिंग में ही होती है. बिगिनिंग में थोड़ी मेहनत कर लो, उसके बाद उतना नहीं रहेगा. उसके बाद वो टेंशन नहीं रहेगा कि इंग्लिश कितनी. इतना ही आना चाहिए इंटरव्यू के लिए कि आप इंटरव्यूअर को समझा सको और आप उसकी बात समझ सको. दैट्स ऑल. यू डोंट वांट टू बिकम, you don't need to become the expert in English. Sometimes I wonder. Okay. अभी हम शाहरुख शाहिद पोस्ट लिंक्डइन क्वेश्चंस. Post LinkedIn questions. Yeah, I have seen the post of Shahrukh. Even I got amazed, and yeah, they are doing great post. Guys. So, any more questions, or we can wind up now for today? ठीक है. चलो, तो आज के लिए गाइज यहीं पे वाइंड अप करते हैं, एंड मिलते हैं अगले लाइव सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, एंड थैंक यू एवरीवन.